horrible people. You're dealing with people that are violent and vicious, and that's the leadership and the people right under them, their military or their police. And they've notified everybody, and they put out statements that if you protest, you're going to be shot and killed. The protesters have no guns, and I know you're a brave person, but I don't think you'd be protesting. And so I think it's very hard for them to protest. I fully understand it. They said if you protest,
this right now. Mr. President, what do you want to see? What I did in terminating the Iran nuclear deal, and what I did in sending in the B-2 bombers, it was one of the most incredible attacks anyone's ever seen. Late at night, dark, no moon, and every single bomb went right down those chutes and blew the whole place apart. If I didn't do that, you would have had nuclear warfare in the Middle East, and I think Israel would have been obliterated. I think lots of the Middle East would have been. And you saw that when they sent thousands of missiles to countries that didn't expect anything, they didn't think they were going to be involved. And yet you look at what happened with Kuwait, UAE, Saudi Arabia, Qatar. Take a look at Qatar. They sort of got along, and all of a sudden they're being barraged by missiles. These people would have used nuclear on the entire Middle East. And that was their plan, take over the whole Middle East. And it failed with the nuclear. And then they had thousands of missiles. And for the most part, largely, we've now destroyed those missiles. So thank you very much, everyone. What do you want to see in a deal? You're talking to Cuba. What do you want to hear from them? Well, I am holding Cuba. Cuba's a failed nation. Cuba also wants to make a deal, and I think we will pretty soon either make a deal or do whatever we have to do. We have a lot of great people that happen to vote for Trump. Not that that matters, but we have a lot of great people from Cuba that were violently and viciously thrown out of the country, and worse, their families were killed. And so we're talking to Cuba, but we're going to do Iran before Cuba. What is... And you know, people have been waiting 50 years to hear this story with Cuba. When I left Palm Beach today, there were thousands of people on the road. I'm sure you saw them. And they were from Cuba and from Venezuela, all friendly, waving the flag and waving the American flag. They've been waiting 50 years for what's happening with Cuba. So I think something will happen with Cuba pretty quickly. Do you have an idea of the Iran civil strife? Is it looking more like that it was in the U.S.'s meaning the Iran civil strife that happened on the first day of the war? We don't know. That's under investigation. Mr. President, what do you want to see in a deal with Iran to end the war, and how does that differ from Israel's objectives? You said they might have different objectives. I think we have similar objectives, really, but it could be a little bit different. They're there and we're very far away, but I think we probably have pretty similar with Israel. The relationship has been very good. The militaries are very well coordinated. Ours is the strongest by far in the world, and they have a real good military. They're really good. They have a lot of our weapons. They have our planes. They have our missiles. They have our Patriots. They have a lot of our weapons. We make the best weapons in the world. And now what we're doing, as you probably saw, we have the Raytheon and all of the Lockheed, all of these companies are now building plants because we don't want to wait. We make the best weapons, but we don't like to have to wait for them. What we do have, though, is at a very high level, we have unlimited weapons at a medium to high level. And they're really doing the trick. And we're not using they call it the elite weapons, because frankly, they haven't, outside of the original attack, they haven't been necessary. These companies are building facilities, and they've already started all over many of them are building many buildings right now to make so that we wait 2 weeks instead of 2 years for weapons. So last week you said that we're nowhere near sending ground troops to the Middle East. I don't talk to people like you about that. I mean, why would I tell you I'm sending or not sending? I don't talk about military strategy. Who would talk about it? I mean, who would answer a question like that? Do you have a comment on the 6 service members? Go ahead. Who else? What do you want to see in a deal? Because earlier you said reportedly that... Well, you start off with there will be no nuclear weapons. That's where it starts. And then on top of that, there's plenty of things that we're going to get. Thank you very much. Comment about Israel? डोनाल्ड ट्रंप तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। दौरान परवाज़ उन्होंने कहा गुफ्तगू करते हुए कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं, उनसे आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है। ट्रंप ने नेटो को भी धमकी दी है।
और बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर नेटो ने अपना हरमुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ये भी कहा कि रवां माह के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक से अपना हरमुज़ की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ईरान में ड्रोन साजी की सनत को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अपना हरमुज़ की हिफाजत में दूसरे ममालिक मदद करें। इसराइल अमरीका के साथ मिलकर अपना हरमुज़ को महफूज बनाने पर काम कर रहा है। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। बोले ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती हैं मुलाकातें जब आपने हरमुज़ से मुस्तफ़ीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करें कि वहाँ कुछ बुरा ना हो। ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ आपने हरमुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद की अपील की थी और उम्मीद जाहिर की थी कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज़ आपना हरमुज़ भेजेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हफ्ते के रोज़ आपना हरमुज़ को खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद तलब की गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से भी इस हवाले से बात कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं है कि वो तैयार होंगे। 7 ममालिक से आपना हरमुज़ से मुताल्लिक गुफ्तगू चल रही है, उनसे आपना हरमुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। इसराइल आपना हरमुज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका के साथ काम कर रहा है और साथ ही साथ ट्रंप ने नेटो को भी धमकी दी है कि अगर नेटो ने अपना हरमुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। यह भी कहा कि रवां माह के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। पासदारान इनकलाब ईरान के तर्जुमान ने कहा है कि ट्रंप ने तो कहा था कि अमेरिका ने ईरानी बहरिया तबाह कर दी है। अगर ऐसा ही है तो फिर हिम्मत करें और खलीज फारस में अमेरिकी बहरिया भेज दें। तर्जुमान पासदारान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि अभी तक ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उसने 10 साल पहले तैयार किए थे। अभी ईरान ने वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए जो उसने जून 2025 के बाद तैयार किए थे। अपना हरमुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की जो अपील की थी उस पर दुनिया भर से खामोश रद्द अमल सामने आया है और अब तक किसी एक मुल्क ने भी ट्रंप की अपील पर खित्ते में बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान नहीं किया। अमेरिका के माशी इत्तेहादी जापान ने अपना हरमुज़ में अपने बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया है। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा है कि खित्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई तभी जापानी बहरी जहाज़ अपना हरमुज़ भेजे जा सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी जाहिर की है। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने ट्रंप के मुतालबे पर जवाब देने के बजाय ये कहा है कि चीन मुतालिका फरीकैन से राब्ते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। ट्रंप के बाद अमरीकी वज़ीर तवानाई ने भी अपना हरमुज़ खुलवाने के लिए चीन से मदद मांग ली है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि चीन अपना हरमुज़ खुलवाने में तामीरी शराकतदार का किरदार अदा करेगा। बरतानवी वज़ीर तवानाई एड मिलीबैंड ने कहा कि हम अपना हरमुज़ खुली रखने के लिए अमरीका और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि हम बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन भेज दें। जनूबी कोरिया ने कहा कि हमने ट्रंप की अपील पढ़ ली है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज़ भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। फ्रांसीसी वज़ीर